Good morning, students. Kindly wait for 2 or 3 minutes so many more students can join. Okay, Yes, sir. please wait for 2 or 3 minutes. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Please wait for 2 or 3 minutes so that. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So how are you at the home? कैसे हो आप लोग? सर बढ़िया सर। बढ़िया है सर। घर पे फिर से जाके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लगा। क्लास में सर अच्छा लगता था, इधर ठीक नहीं लग रहा था। तो इतने साल तो सब घर पे रहे ही, कॉलेज में रहते तो और मजा आता ना। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I think we should start the lecture. Today we are going to study centrifugal pump. Okay. So I will start from the basic. पहले थोड़ा basic पढ़ेंगे. Then I will show you some video regarding this topic. After that, we will discuss many more. Okay. So this is the first slide. This slide tells about the centrifugal pump, that what is centrifugal pump, what are the main parts. Okay. So like you can see on the screen, the centrifugal pump converts the mechanical energy into hydraulic energy. Okay. And if this hydraulic energy is in the form of pressure energy, okay, then the conversion of mechanical energy will be into pressure energy by means of centrifugal force. Okay, so this is the thing. So during conversion, there will be centrifugal force acting on the fluid. Then we can say that hydraulic machine is called as centrifugal pump. Okay, I think audible to you now. I am. तो टरबाइन में क्या होता था, हम लोग फ्लूइड एनर्जी को कन्वर्ट करते थे मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन पंप के केस में क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हाइड्रोलिक एनर्जी में. ओके, तो इसके कुछ पार्ट्स है. दे आर मेन पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप लाइक इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप विद अ फूड वाल्व एंड स्ट्रेनर and the delivery pipe. So these are the 4 main parts. Okay, so please listen carefully. In between the lecture I will ask you. Okay, so I have collected some figures from the Google. Okay, and now I am going to discuss the main parts. The first one is impeller. So impeller is the heart of the centrifugal pump. Okay, it will be a rotating component. Okay,
It transfer energy from motor that drives the pump to the fluid being pumped, okay, by accelerating the fluid outwards from the center of rotation. I am going to again say impeller जो है इसका हार्ट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ओके। ये क्या है, एक तरह का रोटेटिंग कंपोनेंट रहेगा। जैसे हम लोग टरबाइन में क्या पढ़े थे, टरबाइन में हम लोग का था हब था, है ना, रोटर था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का इम्पेलर रहेगा, ओके। ये क्या करता है कि एनर्जी को ट्रांसफर करेगा तुम्हारे वहां का जो मोटर रहेगा वहां से, ठीक है। सेकेंड पार्ट है तुम्हारा यहाँ पे केसिंग, ओके। केसिंग के बारे में मैंने पहले बता चुका हूँ, इट इज द पार्ट which covers the all parts of the hydraulic machine. Already I told you now. So in this casing, it receives the fluid being pumped by the impeller. Okay. So in the figure you can see, okay, there is a shaft here. This is the shaft, and here is the impeller. Okay, this section is not open. I will show you with the help of video. This is the chamber where impeller has been fitted. Okay, this is the suction. This is the casing. The green part is the casing. Okay, so this is the discharge. This is the suction. Okay, and here also a figure which tells you the some parts of the centrifugal pump. So now the third part is suction pipe with a foot valve and strainer. So here a pipe whose one end is connected to the inlet of the pump and another end dips into the water in a sump. That means where is the sump? Sump means there will be the collection of water. Okay. आप लोगों ने देखा होगा गांव वगैरह में, है ना, वहाँ पंप जो लगी रहती है नदी में या फिर आपका तालाब वगैरह में लगा होता है। एक पाइप कहाँ होता है, एक पाइप होता है आपका पंप में कनेक्टेड होता है, और एक पाइप होता है आपका जहाँ से पानी हम लोग को निकालना होता है वहां डाला रहता है, ठीक है। तो यही चीज को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो पाइप पानी के अंदर रहता है उसके एंड में एक फुट वाल्व लगा रहता है, ओके। फुट वाल्व वाला फिर से बोलिएगा ना सर, नेटवर्क प्रॉब्लम, आवाज ही नहीं आ रहा। ओके, फिर से बोलता हूँ, रुको मेरे को वॉल्यूम बढ़ाने दो। Now I can I think you can hear me clearly. Am Yes, I? yes. Okay. So we are discussing suction pipe with a foot valve and strainer. So in this case, we have found in the village or any area near the pond, है ना, जहाँ पे तालाब वगैरह नदी रहता है, रिवर के पास, वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग को अगर पानी निकालना होता है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है फिक्स किया हुआ। तो वहाँ पे पानी निकालने के लिए करते क्या हम लोग? तो बोरिंग पाइप सर। हाँ, इसके हाँ पार्डन, फिर से बोलो। मोटर यूज करते हैं सर, सक्शन। बोरिंग पाइप सर, गाँव में जो पानी नीचे से, अरे पानी हम लोग बोरिंग पाइप ना सर। बोरिंग नहीं, अरे जैसे कि मान लो तालाब में पानी है, हमको वहां से निकाल के उसको कहीं जमीन में डालना है, तो वहां पे पंप यूज करते हैं ना हम लोग। हाँ यस सर, यस करते सर। हैं। उसी पंप का बात हो रहा है। वो ग्रीन ग्रीन वाला पंप पाइप ना सर, वाटर पंप, कहीं पे टुल्लू पंप बोलता है। हाँ, तो वहां पे क्या होता है, एक पाइप जो होता है तुम्हारा जाके जहां से पानी निकालना है उसके अंदर डाला रहता है ना। तालाब में रहता है सर, एक पाइप इधर रहता है। एक पाइप तुम्हारा पंप में जाकर फिक्स रहता है। देखो वही चीज यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि a pipe whose one end is connected to the inlet of the pump and another end dips the water, है ना। तो जो पाइप पानी के अंदर होता है उसके एंड में एक फुट वाल्व लगा रहता है, ठीक है। हाँ सर, नोजल टाइप का लगा हुआ रहता है। वेरी गुड, हाँ उसमें वहीं पर रहता है। पानी का सेक्शन मतलब बना के रखने के लिए। हम्म। और वहीं पे जो है फुट वाल्व में ही तुम्हारा एक स्ट्रेनर भी फिक्स हुआ रहता है, समझे। इसको दिखाएंगे वीडियो से। फिर नेक्स्ट कंटेंट है डिलीवरी पाइप। तो ये कैसे रहेगा, इसका एक एंड रहेगा पंप के आउटलेट से कनेक्टेड
ठीक है, और एक एंड वहां रहेगा जहां पे हम लोग को पानी फेंकना है ना। इसी को बोलते हैं डिलीवरी पाइप, मतलब जो विच कैरीज द वाटर फ्रॉम द पंप टू द स्पेसिफिक प्लेस, देन इट इज कॉल्ड एज डिलीवरी पाइप। ओके, सक्शन पाइप मतलब क्या, जो पाइप जो पानी को सक करके डालेगा पंप में जाएगा, है ना, फिर पंप से वो चला जाएगा उधर। तो दीज आर द मेन पार्ट्स, फर्स्ट वन इज इम्पेलर, सेकंड वन इज केसिंग, थर्ड वन इज सक्शन पाइप विद द फुट वाल्व एंड स्ट्रेनर, एंड द फोर्थ वन इज डिलीवरी पाइप। ओके, आप इसको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जाने के पहले मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, ठीक है, प्लीज होल्ड। I think we should discuss many more. Okay, wait for a minute. Let me open the video. Is this screen visible to you? Anyone? दिख रहा है screen? दिख रहा है। Yes, sir. Centrifugal pumps are the most preferred pumping devices in the hydraulic world. In this video, we will have a conceptual overview of working of centrifugal pumps. At the heart of the system lies the impeller. Okay, this is the impeller, na? Okay, I'm going to continue. Please listen and watch carefully. It has got a series of curved vanes fitted inside shroud plates. The impeller is always immersed in water. When the impeller is made to rotate, it makes the fluid surrounding it also rotate. This imparts centrifugal force to water particles, and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge sides of impeller, both pressure and kinetic energy of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. Such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure developed by rotating air at eye of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. Impeller is fitted inside a casing, so the water moving out will be collected inside it and will move in the same direction of rotation of impeller to the discharge nozzle. Here you can note one specialty of casing. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream and will also help in reducing exit flow velocity. Reduction in flow velocity will result in increase in static pressure, which is required to overcome resistance of pumping system. Here you can see more details of vanes inside impeller. They are backward curved vanes with state-of-the-art eye configuration. This vane is extracted from a Kirloskar pump model. If pressure at suction side of impeller goes below vapor pressure of water, a dangerous phenomenon could happen. Water will start to boil, forming vapor bubbles and spoil impeller materials over time. This phenomenon is known as cavitation. More the suction head, lesser should be the pressure at suction side to lift water. This fact puts a limit to maximum suction head a pump can have. Careful pump selection is required to avoid problem of cavitation. Current impeller type is enclosed.
Semi-open and open impellers are also in use depending upon application. If the working fluid is cloggy in nature, it is preferred to use open kind of impeller. गाना कौन बजा रहा है? गाना बंद करो ना. Okay, kindly mute the mic. सर Whose voice is coming? Okay, बताओ कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था? मैं YouTube वीडियो में दिखा रहा था ना, शुरू से दिखाता हूँ. I am going to show you from the beginning. Okay. I think it is visible to you now. Centrifugal pumps are the most preferred pumping devices in the hydraulic world. In this video, we will have a conceptual overview of working of centrifugal pumps. At the heart of the system lies the impeller. It has got a series of curved vanes fitted inside shroud plates. The impeller is always immersed in water. When the impeller is made to rotate, it makes the fluid surrounding it also rotate. This imparts centrifugal force to water particles, and the water moves radially out. Since rotational mechanical energy is transferred to the fluid, at discharge sides of impeller, both pressure and kinetic energy of water will rise. At suction side, water is getting displaced, so a negative pressure will be induced at I. Such low pressure helps in sucking fresh water stream into the system again, and this process continues. This is the reason why priming is important for centrifugal pumps. If no water is present initially, the negative pressure developed by rotating air at eye of impeller will be negligibly small to suck fresh stream of water. Impeller is fitted inside a casing, so the water moving out will be collected inside it and will move in the same direction of rotation of impeller to the discharge nozzle. Here you can note one specialty of casing. It has got increasing area along the flow direction. Such increasing area will help in accommodating newly added water stream and will also help in reducing exit flow velocity. Reduction in flow velocity will result in increase in static pressure, which is required to overcome resistance of pumping system. Here you can see more details of vanes inside impeller. They are backward curved vanes with state-of-the-art eye configuration. This vane is extracted from a Kirloskar pump model. If pressure at suction side of impeller goes below vapor pressure of water, a dangerous phenomenon could happen. Water will start to boil, forming vapor bubbles and spoil impeller materials over time. This phenomenon is known as cavitation. More the suction head, lesser should be the pressure at suction side to lift water. This fact puts a limit to maximum suction head a pump can have. Careful pump selection is required to avoid problem of cavitation. Current impeller type is enclosed. Semi-open and open impellers are also in use depending upon application. If the working fluid is cloggy in nature, it is preferred to use open kind of impeller, but they are slightly less efficient. Mechanical design of centrifugal pump is always challenging. A shaft is used to connect between the impeller and motor. Since water pressure inside casing is huge, a proper sealing arrangement is imperative in arresting water leakage through shaft casing clearance. Mechanical seal or stuffing box-based mechanism is used for this purpose. Impeller is mounted on bearings, but at suction side of impeller, it is not advisable to fit a bearing since it will block the flow. So bearings have to be fitted at the other end.
This means impeller is mounted like a cantilever. For high flow rate pumps, a bearing housing with cooling oil is necessary for improving life of bearings. Okay, so this is all about the centrifugal pump. Now please tell me what you have learned from this video. Anyone? Yes, Ravi Kumar Sharma, I think you are going to say something. सर इसमें वाटर सर एक्सियली इन करता है रेडियली आउट हाँ, सेंट्रीफ्यूगल सर इसका इम्पेलर ही मेन पार्ट होता है रन करने के लिए okay. Thank you, Mr. Ravi Sharma. Mr. Ravi Kumar, I think you are going to say something. Mr. Ravi Kumar, are you there? यस So please say something. सर लो प्रेशर से हाई प्रेशर में खींचता है पानी से, मतलब एक्सियली फ्लो कर, एक्सियली में लो प्रेशर क्रिएट होता है और रेडियल में सर हाई प्रेशर में पानी आउट होता है सर। What are the main? सर वो जो तीन सर इम्पाइलर दिखाया गया, तीनों का कहाँ पे यूज होता है सर? एक इनक्लोज्ड इम्पाइलर था सर, दूसरा आउट भी कुछ था और एक था सर, डिजाइन अलग अलग था तीनों। Three types of impeller. One is Yes. closed, second one is semi-closed, I think, or semi-automatic, and the third one is open. So we use that type of impeller according to our need. If the fluid will be cloggy, then we use the open type, but it will produce less efficiency. Okay. Yes sir. Who is Mr. Boni? Yes, sir. Real name? Boni Tudu है sir. Have you ever attended the lecture offline class? Yes, sir. Attend किए हैं. आपका फोटो नहीं दिख रहा है इसलिए मैं सोचा कि कौन है भाई. Okay, so that was something. Okay, now I'm going to continue again. So I have told you the working principle with the help of video, but I'm going to tell you with myself again. Okay. The first point is it acts as a reversed of an inward flow radial turbine. Okay. The first thing is this. So what is the meaning of this content? That means the flow will be in the radial outward direction. Okay. The main point of this pump is the centrifugal pump works on the principle of forced vortex flow. So anyone please tell me what is forced vortex flow? I think you have a study in the physics or fluid mechanics also. So in this case, a certain mass of liquid is rotated by an external torque. Okay. Then the rise in pressure head of the rotating liquid takes place. सर मतलब यहाँ शाफ्ट से जो रोटेट होता है उससे जो प्रेशर टॉर्क लगता है उसके वजह से ना सर? हाँ हाँ, इम्पाइलर पे जो लगता है। हाँ, impeller. Okay, इम्पाइलर, good. So here the rise in pressure head at any point of the rotating liquid is proportional to the square of tangential velocity. That means V square by 2g. So here pressure head is V square by 2g. So we can say at the outlet of the impeller, if the radius is more, then the rise in pressure head will be more. Okay. And the liquid will be discharged at the outlet with a high pressure head. But this, due to this high pressure head, the liquid can be lifted to a high level. Okay. So this was the thing I have
shown you in the video, I think. Okay. So now I'm going to show you again a video. I have collected it from the YouTube, so it will help you to understand uh, the centrifugal pump easily. Okay. So let me first select the video. Yes, this was the video. And we have only 10 minutes left. Okay, so I think this screen is visible to you now. Yes, sir. Yes, sir. How does a centrifugal pump work? Centrifugal pumps are used to pump water, oil, and other liquids. Let's try to understand why these pumps are designed to carry out the task of transporting liquids successfully. The main elements of a centrifugal pump are the casing and the impeller, which drives the liquid. The impeller is mounted on a shaft. The shaft can rotate on bearings. The power is transmitted from the motor, most often an electric motor, to the shaft. The impeller of the pump rotates, together with the shaft. The vanes in the impeller act on the liquid and make it rotate. The liquid particles are accelerated. As a result of the impact of the vanes, the energy of the liquid flow is increased. The accelerated liquid particles enter the volute, which converts part of the velocity into pressure. The diameter of the passage section of the voltage in the discharge nozzle gradually increases. The fluid velocity decreases, and the pressure, according to Bernoulli's law, increases. Three main types of impellers are used in centrifugal pumps: closed with back and front discs, vanes and fairings. Semi-open with the vanes are free on the front side. Open with the vanes free on both sides. If bearings support only one side of the shaft, the pump is called a cantilever pump. It is a versatile design that is used in small and medium-sized pumps. A heavy impeller cannot be cantilevered. In this case, the shaft is mounted on bearings and the impeller is placed between them. This construction scheme is well suited for double suction impellers where the vanes are placed on both sides. A double suction impeller allows liquid to enter the impeller blades from both sides. Thus, we have two pumping units without significantly increasing the weight and dimensions of the pump. This scheme is relevant for pumps with high capacities because the pumping units are installed parallel. Multi-stage centrifugal pumps. By installing pumps in series, the head of the liquid can be increased in the system. Pumps installed in series can be combined by placing several impellers in the same casing. The liquid will go from the first impeller to the second one, from the second impeller to the third one, and so on. Using a multi-stage arrangement can increase the head of the pump many times over, as the impellers are mounted in series, and each of them increases the head. In multi-stage pumps, different impellers can be used. For example, a screw centrifugal pump has an auger on the first stage and a centrifugal impeller on the second stage. When the pump is running, the liquid flows continuously into the pump casing through the suction nozzle. But what happens if there is no liquid in the pump? For example, when the pump is first switched on, the pump casing will be empty. For the liquid to fill the pump, the pressure in the pump casing has to be lower than the atmospheric pressure. Then, the atmospheric pressure will cause the liquid to fill the casing. To reduce the pressure in the pump, some of the air has to be pumped out of the casing. Is an ordinary centrifugal pump able to do this? The answer is no, because the particles move in the pump due to inertia, which depends on mass. The mass of air particles is much lower than that of water particles, so it is impossible to pump air at speeds that a centrifugal pump operates at. For this reason, centrifugal pumps must be primed before switching on, either through a special channel in the casing or through the discharge nozzle. If you are interested in rearranged pumps or other designs, let us know in the comment section, and we will try to make a video. Okay, so now please tell me something about that video. Mr. Pikesh,
Are you there? Pikesh will tell us. Mr. Pikesh, Yes, sir. please tell me. सर हम वीडियो आधा देखे सर, अच्छा से नहीं देख पाए सर। Okay, okay. So, Mr. Kunal, I think you have watched the whole video. Mr. Kunal. Miss Nafisa, are you there? Nafisa Simran. That type of behavior will not be tolerated. Okay, I think many more students are joined and they are not listening the lecture, so I will consider them as absent. Okay, so in that video, okay, so in that video we have seen a content that priming. Okay, so priming and why it is necessary. तो होता क्या है कि वहां पे जो होता है ना, बहुत सारा एयर जम जाता है ना, तो फ्लो नहीं होगा। और हम लोग ने वीडियो में देखा भी है कि वहां पे एयर का मास बहुत कम होता है, तो वो इम्पेलर के पास जा नहीं पाता है सही ढंग से। तो इसीलिए हम लोग प्राइमिंग करते हैं। प्राइमिंग मतलब क्या हुआ कि हम लोग वहां पे पानी डालते हैं, वहां पे एक बना होता है सक्शन पाइप के पास ही, वहीं पे एक छोटा पाइप होता है जहाँ पे हम लोग पानी डालते हैं, जिससे हम लोग एयर को निकाल देते हैं। ठीक है, प्राइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, इंटरव्यू में आ सकता है। ओके, तो अगर हम लोग प्राइमिंग ना करें तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द वीडियो क्या होगा? वहाँ कैविटेशन जम सकता है, या फिर वहाँ वाटर बॉयल हो एयर सकता है, सक्शन ही नहीं होगा। यस सर। प्रेशर बन जाता है ना, इसके वजह से वाट पानी को सक ही नहीं कर पाएगा वो। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू हैव द क्वेश्चन, द बेसिक थिंग्स। Mr. Somyajit Das, please tell me what is centrifugal pump and the main parts and the working principle. Mr. Somyajit Das. सर सेंट्रीफ्यूगल पंप एक मतलब सर हाइड्रोलिक मशीन है जो सर क्या बोलते हैं सर मैकेनिकल एनर्जी को सर हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गुड गुड गुड। हाइड्रोलिक। हाँ हाँ, और बताओ समझित इसके बारे में कुछ मेन पार्ट। इसका सर मेनली 4 पार्ट है सर। इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप सर और डिलीवरी पाइप। ओके, तो सभी का कुछ कुछ 1-2 पॉइंट बताइए सभी मेन पार्ट्स का। तो इम्पेलर से रोटेटिंग ही होता है जिसके थ्रू सर मेनली मतलब सक्शन क्रिएट होता है। ओके, जो सर मतलब शाफ्ट के थ्रू सर मतलब ये मोटर के साथ ज्वाइंट रहता है, मोटर को मूव कराता है, इलेक्ट्रिक मोटर। वेरी गुड वेरी गुड। केसिंग सर एगो कवर है मतलब जिसके अंदर सारे मतलब ये इम्पेलर इस सब से फंक्शनिंग करता है केसिंग के अंदर, जिससे पानी सर मतलब बाहर अंदर ही रहे। अच्छा, केसिंग का एक और यूज क्या हो सकता है? हम लोग केसिंग लगाते क्यों हैं? ताकि कोई बाहरी डैमेज, प्रोटेक्शन के कारण, एक्सटर्नल कुछ डस्ट वगैरह ना हो। हाँ बाहरी डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए सर। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन जैसे। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और बताओ समझिए, और बताओ कुछ पॉइंट बताओ, अच्छा बोल रहे हो। और सर मेनली सक्शन पाइप से लो प्रेशर ये होता है और डिलीवरी सर हाई प्रेशर। वेरी गुड। ओके, अच्छा, सक्शन पाइप का जो मतलब डायमीटर है वो सर डिलीवरी पाइप का डायमीटर से बड़ा होता है। ओके। अच्छा, ये केसिंग का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता है? इंक्रीजिंग एरिया और डिक्रीजिंग एरिया क्या होना चाहिए? कैसे समझे? केसिंग का जो स्ट्रक्चर होगा वो इंक्रीजिंग एरिया टाइप होगा या फिर डिक्रीजिंग एरिया टाइप का होगा?
सर डिक्रीजिंग एरिया टाइप होगा सर, मतलब जिधर वो मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब जहाँ निकलेगा डिलीवरी पाइप का वहाँ डिक्रीज होगा सर, तभी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो ठीक है, आप लोग बताइए क्या ये सही बोल रहे हैं क्या? मैं कंफ्यूज हो गया। आई थिंक ये वाला हमको भी नहीं समझ में आया सर। casing will be the increasing area type. हाँ सर इंक्रीज होगा क्योंकि अच्छा, मुझे आपको एक स्टूडेंट बताइए कि व्हाई द प्राइमिंग इज नेसेसरी, क्यों प्राइमिंग करना होता है? एयर जो ले लेता है सर उसको हटाने के लिए, एयर ले लेगा तो सर शक उतना नहीं कर पाएगा। एयर को हटाने के लिए, एयर को रिमूव करने के लिए हम लोग प्राइमिंग करते हैं, है ना? यस। ओके ओके, एंड अगेन आई थिंक okay, so I will try to improve this Zoom meeting. Okay, I have faced some problem regarding the Zoom. Okay, and the next सर thing is कॉलेज में प्रोजेक्टर है सर? I am not in the college, I am in the home. नो सर, Okay? ऐसे ऑफलाइन क्लास में प्रोजेक्टर में करता अच्छा लगता है, जैसे अभी ऑनलाइन में वीडियो चल Offline रहा है, class में इधर क्या बता करेंगे रहे ना, हम लोग स्मार्ट क्लासरूम में क्लास करेंगे, ठीक है? वहाँ पे Yes. प्रोजेक्टर भी जो है सही ढंग से लगा हुआ है ना? वहाँ पे हम लोग को हेल्प मिलेगा थोड़ा समझने के लिए। ऐसे क्या होगा, वीडियो हाँ को सर, ये मतलब वीडियो देख के समझेंगे तो आसानी होगा समझने में, अच्छा जैसे यहाँ लगता है से। सर। हाँ हाँ हाँ, अच्छा लगा। अच्छा, और आप लोग ने फीडबैक भरा था वो क्लास के रिगार्डिंग? यस सर, उसमें सब यस सर। सभी सब्जेक्ट का नो सर, हम feedback लोग को भरिए। नहीं मिला सर। सिर्फ लेटरल सर। हाँ सर, वहाँ से रिक्वायरमेंट में सर वो डाले थे सर स्मार्ट क्लास का। हाँ, गुड गुड। मैं अगर मुझे देखने को मिलेगा तो मैं उसको जरूर उसको अप्लाई करूंगा, ठीक है? ओके, सो देन tomorrow, I think tomorrow is the class or not? I think tomorrow is not class. Okay, in the next lecture we will study the mathematical part of the centrifugal pump. Okay, कल तो छुट्टी है ना, छुट्टी है? ईद का। कल परसों दोनों दिन छुट्टी है। नोटिस का वेट कीजिए, देखिए नोटिस कब आता है, ठीक है? फिर जब भी अगर अगला क्लास होगा तो उस दिन हम लोग उसका ललित सर भेज देंगे सर नोटिस। क्या कुणाल? नोटिस से बता देंगे सर ललित सर। छुट्टी के नाम से कुणाल कितना खुशी से बता रहा है सर, देख रहे हैं आप। कुणाल को पढ़ने हाँ में सर, ललित सर लास्ट में जो पढ़ाए सर वो भी नहीं समझ में आया, यहाँ नेटवर्क बड़ी खराब है सर। लास्ट वाला सुन ही नहीं पा 15 मिनट का। अच्छा सुनिए सुनिए, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा, ठीक है? तो आप लोग यूट्यूब भी देख लीजिएगा, है ना? तो जो समझ में Yes, नहीं आया तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके सर हेलो सर, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, गूगल क्लासरूम बना दिए सर, उसी में सब चीज भेज दीजिएगा, उसी से सब देख लेंगे। यार कितना बना हुआ था, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, गूगल क्लासरूम, ठीक है? गूगल क्लासरूम बनाता हूँ, ठीक है? वहीं पे मैं नोट्स डाल दूंगा और ये वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है? ओके, ओके ओके, जिसमें आपको सुविधा मिले वही कीजिए। हाँ नहीं नहीं, ठीक है, मैं वही बना दूंगा, गूगल क्लासरूम बना दूंगा, वही मतलब सही चीज है। क्लासरूम में सर परमानेंट रह जाएगा, यहाँ पे व्हाट्सएप पे ये सही बात है, कभी हाँ डिलीट सही हो है, तो सही चला बात, था। पॉइंट है। ओके, तो मैं गूगल क्लासरूम अभी बना के मैं शेयर कर देता हूँ और उसी में आप लोग सभी ज्वाइन कर लेना और वहीं पे मैं नोट्स भी आज का डालूंगा और अटेंडेंस डाल दूंगा, ठीक है? सर आज वाला वीडियो भी भेज दीजिएगा सर, वीडियो का लिंक। हाँ, उसी में डाल दूंगा मैं। हाँ सर एक चीज बोले सर। बोलिए। सर एक सप्ताह रिवीजन क्लास करवाइएगा सर, मतलब कॉलेज जब खोलेगा तो टरबाइन वगैरह और। हाँ वो कराएंगे ना, क्योंकि देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप खत्म सर होगा, मेरा पूरा छूटा हुआ है सर। मैं पढ़ाऊंगा फिर से दोबारा इसको, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप खत्म होगा, फिर रेसिप्रोकेटिंग का पंप आने वाला, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर मैं शुरुआत से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? तो मुझे लग रहा है ये सिलेबस दोबारा कवर होने वाला है इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरा शुरू से छूटा हुआ है सर, एग्जाम इंटरनल में कुछ समझ ही नहीं। ओके ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, आप लोग का एग्जाम कैसा हुआ, इंटरनल एग्जाम, ये बताइए, फुल मशीन का? मेरा खराब है सर, बाकी अच्छा गया ना? यस सर। ठीक है, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्लास कीजिए, मैं अभी इस क्लास को खत्म कर रहा हूँ, अभी अगली क्लास से मिलते हैं। थैंक यू थैंक सर। यू सर। चलिए, हाँ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।